Hello and welcome. Now coming to the next category of diseases, that is helminthic diseases. Now in classification, while studying in your 10th standard, when you study the invertebrate classification, that time you have studied two phylums. One is Aschelminthes, which is also called as a Nemathelminthes, and another is Platyhelminthes. Now platy means flat, helminth means worm. Same this Aschelminthes or Nemathelminths, these are a roundworm or a threadworm. Now these worms are coming from infected person and contaminated the food sources and the water sources. Actually this worm having immense capacity to lay the eggs, बहुत ज़्यादा संख्या में ये इंटेस्टिनल कैविटी में रिसाइड करने से बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे एग्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। और ये एग्स जब फीकल मैटर के द्वारा बाहर की मिट्टी से कांटेक्ट में आते हैं, बाय नॉट मेंटेनिंग द सैनिटरी कंडीशन, सो दे पोल्यूट दैट सॉइल, सॉइल को भी कंटेमिनेट करेंगे। और कंटेमिनेशन के बाद इफ एनी वेक्टर, वेक्टर यानी ट्रांसपोर्टिंग मीडिया, अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग मीडिया वेक्टर दैट इज अ लाइव ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई उसके ऊपर अगर बैठ जाती है, दैट स्पोर्स और दैट एग्स get transported from the infected soil to the food source. अब ये जो अंडे होते हैं, जब हाउस फ्लाई अगर वो कंटेमिनेटेड सॉइल पे बैठती है तो या तो उनके लेग्स को या फिर उनके विंग्स को स्टिक करेंगे। और ऐसे हाउस फ्लाई जब कांटेक्ट में आती है कोई फूड मटेरियल या वाटर सोर्स के ऊपर जो कंज्यूम किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में these spores और these eggs are engulfed, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं खाने की चीज के द्वारा, and they reside and they hatch out to form a small worms. वहां से छोटे छोटे वर्म्स निकलेंगे और वो वर्म्स अपनी वहां पे पोजीशन इंटेस्टिनल कैविटी में सेट कर देंगे। नाउ दूसरा जो इनसे खतरा है कि दीज वर्म दे टेक द प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाय ह्यूमन, ड्यू टू दैट कंटिन्यूसली दे आर एब्जॉर्बिंग द फूड मटेरियल एंड द पेशेंट कुड नॉट गेट द एनर्जी सोर्सेज, एंड ड्यू टू दैट द पेशेंट बिकम वीक, पेल इन कलर, रेस्टलेसनेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। तो वो कौन से है हेलमिन कैटेगरी में? जैसे सबसे पहला हम लोग एस्केरिस, इट इज कॉल्ड एज अ राउंड वर्म जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और ये राउंड वर्म रिसाइड्स करते हैं इन पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन कैविटी के नीचे रेक्टल कैविटी में। एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, इट इज अ जेनरिक नेम ऑफ दिस हेलमिन, एंड ड्यू टू रिसाइडिंग इनसाइड द इंटेस्टिनल कैविटी में वो ऐसी जगह बनाते हैं जहां से वो फूड मटेरियल को आराम से कंज्यूम कर सके। अब इसके कारण एब्डोमिनल स्पैज्म का मतलब एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं ये कंटिन्यू खिंचाव आता है उनमें या अपनी तरफ खींचते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज वर्म दे अफेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोसा में वो एंटेंगल करते हैं और उसके कारण एब्डोमिनल मसल ये खींचती रहती है कंटिन्यूअस, जिसके कारण इंसोम्निया का मतलब होता है
स्लीपिंग सिकनेस, वो पर्टिकुलर पर्सन को नींद आती ही नहीं और हमेशा उसको अनईजी फील होता है, रेस्टलेसनेस फील होता है. So these are the symptoms. Secondly, whatever the food material taken by these worms, the excretory product or the waste product directly pour inside the intestinal cavity, which feel the uneasy sensation because the internal environment of the intestine, that is a homeostatic environment, it may fluctuate its pH balance due to the toxic excretory material secreted by this worm, which feels for vomiting as well as a loose motion condition. So this is about ascaris. Now next that is dracunculosis, and it is caused by Dracunculus medinensis. So this pathogen or this worm, how it affect when it enter inside the body cavity, at that time the blisters on skin, hand as well as whole body. अब ये ब्लिस्टर क्या होता है, जब हमारी बॉडी अगर जल गई और उसके ऊपर हम लोग पानी डालते तो उसके बाद क्या होता है, स्किन के ऊपर ऐसे फपोले आ जाते, वुंड्स आ जाते, जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है. दैट इज कॉल्ड एज द ब्लिस्टर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर. सो पूरी बॉडी में इस प्रकार के फपोले आ जाना या द वुंड्स filled with the liquid, these are the symptoms. Elephantiasis is caused by Wucheria bancropti. The name of pathogen is Wucheria bancropti. This Wucheria bancropti enter inside the body and especially affect the portion of legs portion को, then also enter in the scrotal sac, जहाँ पे टेस्टिस होती है, अंडाशय जिसको कहेंगे, उसके अंदर एंटर करके वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो स्वोलन हो जाता है ड्यू टू द सीवियर इन्फेक्शन, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स. नेक्स्ट टेनियासिस. नाउ टेनियासिस, दिस वर्म is called as a ribbon worm, and the generic name is Taenia solium. Now this worm having suckers and hooks at the anterior most portion of the head, and with that suckers and hook it entangle the intestinal mucosa. Intestinal mucosa को वो entangle करेगा. Second thing is that the body is very thin, बहुत पतली बॉडी होती है, रिबन लाइक, तो इसलिए लगभग 1 से 1.5 फीट लंबाई वाले ये जो वर्म्स है, ये पूरी बॉडी को फोल्ड करके छोटे बॉडी में खुद को छुपा सकते हैं. ये भी फीड करते हैं प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के ऊपर. और यहाँ भी जैसे सेम वी हैव सीन फॉर एस्केरियासिस as well as teniasis. In both the cases the abdominal pain, then loss of appetite. Abdominal pain इसलिए होता है कि abdominal muscle they are continuously itching, और ऐसा खिंचाव होता है उन मसल्स के अंदर, इसलिए पेन महसूस होता है. इसके कारण खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि होम्योस्टैटिक कंडीशन अभी जो आपको बताया कि जो पीएच बैलेंस है इंटेस्टिनल कैविटी के अंदर, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब होगा ड्यू टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट ड्रॉन आउट इनसाइड द इंटेस्टिनल कैविटी. देन नर्वस डिसऑर्डर मीन रेस्टलेसनेस होना, कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं होना. तो इसके कारण क्या होगा, these conditions are created, that is nervous disorder, and finally the indigestion, same like that of ascaris, the symptoms of the worm. Now only cure is taken is that our
फूड मटेरियल, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मिल्क आइटम्स है, ऐसे आइटम को हमेशा ढक के रहना है। सेकेंडली, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ये अवॉइड करना है कि बाहर से जब हम लोग खेल के आते हैं तो हमेशा हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमको कि आप अच्छी तरह से हाथ पैर धो लो, क्लीन कर लो। उसके पीछे का यही है कि अगर आप ऐसे इन्फेक्टेड सॉइल से कांटेक्ट में हो तो वो जो स्पोर्स है वर्म के, वो आपके शरीर में ट्रांसफर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसीजेस, if we are not maintaining the hygienic condition, cleanliness, or in such a condition which are not acceptable. Now, during such time, the maximum sexually transferred diseases occurred after the adolescent stage, but some may transfer from parents also, parents to their child. So sexually transmitted diseases, they are directly concerned with the sexual organ in male and sexual organ in female. Now how it affect that if a proper care is not taken while sexual intercourse, or having the bad habitats, so such dreadful diseases infect and destroy the whole human body, पूरे human body को ही destroy कर देंगी। That's why to maintaining a social behavior, then cleanliness, hygienic condition is much more important considering to these cases. Now, how these diseases occur? Some bacteria and viruses, they are responsible to transmit the disease. Now, when they transmit and they infect the sexual organ, at that time they start such a problem which also interfere with our body system as well as जो बाकी के हमारे काम है वो भी काम इसके कारण सफर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है, जनरली द फर्स्ट कैटेगरी syphilis, which is also called as a French pox, and in this the causative bacteria causative agent is Trypanosoma pallidum, ये कॉज करती है। और जनरली मेल्स में जो पेनिस होता है या मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उस मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के एरिया को इन्फेक्ट करके राइट फ्रॉम द टिप where maximum time the moisture is there, so they form the ulcers on genital organ which are not maintaining the cleanliness or hygienic condition. So these ulcers, such type of round ulcers are there, and the ulcer after some time, if not treated by proper treatment, then whole skin will be flushed out by this bacteria Trypanosoma pallidum. So it is also a dangerous disease because it may make non-functional to your male sex organ. Second one is gonorrhea. Now this gonorrhea, it is caused by the bacteria Neisseria gonorrhoeae. The name of bacteria is Neisseria gonorrhoeae. Same, the main infective place or in our body, that is the sexual organ. Now here what happened? Here urethral infection, the urethra in male reproductive system, from urinary bladder,
the urethra enters into the penile area. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, उस पेनिस में से यूरेथ्रा इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब it opens outside with a prepuce, or we can say the glans penis, that is the tip of penis. Now here the urethral infection, जितनी वो आपकी यूरेथ्रा की ट्यूब है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका यूरिन पास आउट करने के लिए, आपका सीमेन पास आउट करने के लिए, तो पूरी की पूरी यूरेथ्रल ट्यूब ये इन्फेक्ट हो जाएंगी, वहाँ पे लेशंस होंगे ब्लड के. सेकेंडली द वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, वाइट डिस्चार्ज मीन वाइट कलर का फ्लूइड ये कंटिन्यूस वहाँ से बाहर ऊज आउट होते रहेगा. और व्हाइल मिक्चुरेशन इट इज अ एक्ट ऑफ propulsion of urine outside the body. हम लोग जब मूत्र विसर्जन, एक सादा नाम है उसको, कि यूरिनेशन करने जाते हैं तो उस समय पेन इन यूरिनेशन, यानी आपका यूरिन बाहर निकलते समय बहुत ज़्यादा जलन महसूस होंगी आपको. सेम एज इन केस ऑफ इन फीमेल द लोअर पार्ट बिलो द यूटेरस, दैट इज सर्विक्स, गर्भाशय के नीचे में होता है सर्विक्स. तो उस जगह पे ये इन्फेक्शन होता है. और सेम कंडीशन दैट इज बर्निंग ड्यूरिंग द यूरिनेशन. देन नेक्स्ट वन vaginitis. This vaginitis generally found in females only, which is caused by the bacteria Gardnerella vaginalis. This is the name of bacteria, and the severe infection of bacteria, it oozes out the grayish white discharge, because it rupture the blood vessel and the surrounding area of the vagina. Now these bacteria or viruses, when they get unclean environment, so at that time their intensity of infection is automatically increased. In the same manner, some viruses are there. Now the first virus, herpes genitalis. Now this herpes genitalis caused by this HSV2 DNA virus, and on infection of this virus, the males having painful rashes on the tip of the penis. आपका जो पेनाइल ऑर्गन है उसके टिप वाला जो पोर्शन है, दैट टिप वाला जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस. एंड ग्लांस पेनिस it is muscular due to presence of the smooth muscles inside it. To that area, when it infect, and infection is in case that whole area become reddish in color and the painful. And last, the most dreadful disease, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, commonly called as the AIDS, and it is caused by the retrovirus, that is human immunodeficient virus, HIV virus, and it is most dreadful disease. It is retrovirus. Now what is meant by retrovirus? That it can make the copy, the RNA which is present with reverse transcriptase enzyme. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और वो आरएनए अपनी खुद की कॉपीज करके जहां पे जो होस्ट है, होस्ट के डीएनए में पेनिट्रेट करके उसका पूरा जीनोम चेंज करने की क्षमता रखता है. सो दिस acquired immunodeficiency syndrome. Now the initial attack of this AIDS virus, that is HIV, that initial stage, it enters inside the body, but
the antibodies start to prepare after 2 to 8 weeks. Secondly, the incubation. In second stage, the incubation may long last for 6 weeks up to 10 years. यानी तब तक वो डॉर्मेंट स्थिति में ह्यूमन बॉडी में रह सकता है. थर्ड वन, द एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड एज ARC. इसमें वो सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं जैसे नाइट स्वेट है, फीवर है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी है, लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द बॉडी वेट, और सबसे फोर्थ स्टेज है जिसमें द होस्ट बिकम और द पेशेंट बिकम अपॉर्चुनिस्टिक टू द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज. क्योंकि इम्यून सिस्टम ही पूरा डिस्ट्रॉय होने के कारण द डिसीजेस लाइक निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, they enter and they infect the person, and in such way the person finally death. Now how these infection occur? These mainly the infection occur through the unsafe sexual contact with the infected person. ये सबसे पहला इसका ये है. सेकंड, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड अगर ट्रांसफर करते हैं तो उस समय इट शुड बी स्क्रीन विथ रिलेटेड टू द HIV सिम्टम्स. HIV से उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए. एंड थर्ड, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. इफ मदर इज इन्फेक्टेड, देन थ्रू प्लासेंटा to placenta, the blood circulation which enter inside the fetus body may infect. और इसलिए इसके ऊपर जो मेडिसिन है या क्यूरेटिव मेजर्स है ये बहुत कम है. इसलिए प्रिवेंटिव मेजर में यही करना है, ऑलवेज अवॉइड द पर्टिकुलर थिंग्स फ्रॉम विच द वायरस कैन बी transmitted. Therefore, a safe sexual contact, you should not be multi-sex contact. Second, needles है या blood transfusions है वो properly check होना चाहिए, sterilize होना चाहिए. It is not spread by hugging or handshaking or the things which are used by the patient. So these are so many things. The 1st December celebrate as a AIDS Day. Now NACO, National AIDS Control Organization, they started this program to cure the society peoples who are infected by AIDS from 1987. 1981 में सबसे पहले USA में इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया और इसका जो फर्स्ट पेशेंट इंडिया में मिला दैट इज इन द ईयर 1986 in Chennai, Tamil Nadu. So this is a most dreadful disease which directly attacks on the human system. No remedy. Finally, the patient goes for death. So such type of dreadful diseases which are not curable, either they damage your body organ or your complete immune system. Okay, thank you.